गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय सोशियोलॉजी क्लास। आज हम लोग एमसीक्यू 2007 जनवरी का क्वेश्चन आंसर लेके हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Who has stated that the history of society is the history of the class struggle? So the right answer will be Karl Marx. So we have to see the explanation, that is the what is class struggle. ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है. That is class struggle happen when bourgeoisie means the rich person or rich people in our society pay the proletariat means the workers to make things for them to sell. The workers have to know say in their pay or their things to make. Since they cannot live without the job or money, Karl Marx saw the workers had to work without any say in the business. सो यहाँ पर जो बोला गया है कि जब रिच पीपल जो अगर हम लोग बोलेंगे कि ओनर अगर खुद के वर्कर को काम करा रहे हैं, उन लोगों का खुद से ये काम छोड़ना का वो उन लोगों का कोई लिबर्टी नहीं होता है. पेमेंट के बारे में भी उन लोगों का कोई लिबर्टी नहीं है. और कार्ल मार्क्स इसी को ये लोग सोसाइटी में जो वर्कर्स लोग हैं वो लोग जूझ रहे हैं अपने हालातों से. सो कार्ल मार्क्स इसी को ही प्रोलेटारिएट बोले हैं. सो दैट द वर्कर्स, आप लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि सो दैट द वर्कर्स हैड टू वर्क विदाउट से एनी से इन द बिजनेस. सो अगर बिजनेस हो या फिर कोई भी काम हो तो वर्कर को बोलने का कोई राइट ही नहीं है. तो who has propounded the concept of the collective representation? So the right answer will be Emile Durkheim. So explanation क्या है? Collective representation is the term included by the Emile Durkheim to refer to the symbol having the common intellectual and the emotional meaning for the member of the group. Collective representation reflects the history that the group, that is the collective experience of the group. Mainly collective representation means collective representation of a group. एक जो ग्रुप होता है हम लोगों के सोसाइटी में उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है. तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी होता है. अगर हम लोग एक ही काम बहुत सारे लोग मिलके करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है. A society which pessimistically depicts the social transformation brought about the modernization is, that is the Mars society. तो मॉडर्नाइजेशन किसको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्नाइजेशन में हुआ है. कैसे हुआ है? मास सोसाइटी में हुआ है. Mass society क्या है? Mass society is any society of the modern era that processes and mass culture, large scale, impersonal social institution. A mass society is a society of which prosperity and bureaucracy have weakened traditional social ties. So the mass सोसाइटी क्या होता है? मास सोसाइटी में लार्ज स्केल होता है. तो प्रोग्रेस अपने सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए मास सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है. अपने जो खामियां हैं वो मास सोसाइटी में रह के कुछ हद तक भर जाता है. तो इसी को हम लोग मास सोसाइटी बोलते हैं और मास सोसाइटी का जो इम्पोर्टेंस है हम यही से जान सकते हैं. In any social agreement in which behavior of the majority of the governed by norms and the rules is known as the institution. कोई भी norms rules जहाँ पे होता है governed by the कोई भी rules अगर establishment हुआ है कोई भी rules का कोई भी norms का तो इसको institution बोला जाता है. Lack of appropriate cultural resource like the language and the knowledge is known as the cultural deprivation. So, cultural deprivation क्या है? Cultural deprived child is described as one who cannot benefit from the educational opportunity in the society. The society may grant for the development of the individual's potential and the fullest extent and the inability to exploit
द अपॉर्चुनिटीज एंड द एम्प्लॉयमेंट दैट सोसाइटी में। एक्चुअली क्या होता है कि सोसाइटी में चाइल्ड को जैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो चाइल्ड सोसाइटी में चाइल्ड के ऊपर बहुत सारा योजना है, प्लानिंग है, लेकिन सब लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो क्या होता है, उसी का एक बच्चे का अगर कोई भी फायदा, कोई भी मौका अगर मिलना चाहिए तो उसको एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है उसका। मतलब उसके पास तक पहुंचता ही नहीं है वो जो मौका है। इससे इससे वो चाइल्ड क्या हो जाता है, डिप्राइव हो जाता है, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं रहता उसके पास। सो इसी को डिप्राइव्ड कल्चर बोला गया है, जो हमेशा मतलब होता है सोसाइटी में ये सब। Who said that the man's uniqueness lies in his possessions of culture? That is the K. Davis. K. Davis कौन है? उनके हिसाब से small defines sociology as the science of the social relation. Kinsley Davis said that the sociology is the general science of the society. The common idea underlying all the definitions mentioned above, that the sociology is concerned with the man, his social relations and his social society, his society. So दिस इज उनके हिसाब से सोशियोलॉजी क्या होता है? साइंस, जनरल साइंस, एक साइंस है सोसाइटी का। ये कॉमन आइडिया है सोसाइटी का। एक सोशियोलॉजी कंसर्न एक इंसान के हिसाब से एक साइंस है, इंसान के हिसाब से सोसाइटी के साथ उसका एक रिलेशन भी है, और सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी भी उसके साथ कंसर्न रहता है। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हर एक के साथ हर एक का रिलेशन है, गहरा हो ना हो तो भी एक रिलेशन है। आप भी उसके ऊपर चाहे या ना चाहे कंसर्न है, वो भी आपके ऊपर कंसर्न है। कंसर्न क्यों है? क्योंकि हम लोग जब कंसर्न होते हैं खुद के ही फायदे के लिए होते हैं कंसर्न। तो दैट्स वाई यही था किंसले डेविस का सोच। Which of the following is not an ascribed status? That is the occupation. Which of the following refers to the individuals whose behavior is the particular role to provide that the pattern upon which another individual basis of his behavior in performing the same role? That is the role model. एक रोल मॉडल हम लोग सोच लेते हैं, उसी के हिसाब से उसी को पैटर्न मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं। द राइट आंसर विल बी सी, दैट इज द मिलर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में जो किए थे, दैट इज नंबर 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। टॉनिस किए थे कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। पार्क एंड बर्जर किए थे टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल। एंड गिडिंस किए थे जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट। So Giddens classify the group in genetic and congregate, ये है उसका explanation. And territorial group क्या है? A territorial group is one which has own defined territory, खुद का territory होता है, जैसे कि village, city state, nation, etc. And non-territory group जो होता है, non-territorial group is one which is not possess any territory of its own. Who has observed that each person in society inevitably occupies multiple status, and that for each of this status there is an associated role? So the answer will be Arlington. So Arlington कौन थे? American anthropologist थे who had marked influence on the development of the cultural anthropology. In his work, he developed that is the status and role describe the pattern in the society. According to the Linton, ascribe status and the assigned of the individual without reference of their innate डिफरेंस और एबिलिटी। सो यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस का जो बात है
उन्होंने इसी के ऊपर जोर दिए थे. The distinctions between in-group and out-group was given by W.G. Sumner. Like the British philosopher Herbert Spencer, Sumner, who taught the Yale from the 1872 to 1909, expounded in many essays his firm belief in the laissez-faire individual liberty and the innate inequalities among the men. Who has classified group into the dyad and the tribe? So the सिमिल जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने ही क्लासिफाइड ग्रुप दैट इज द डायड एंड द ट्राइब उन्होंने किए थे. Simmel viewed that is the human culture is the dialectical relationship between what he termed objective culture and the subjective culture. He understood that is the objective culture is the collectively shared, that is the shared human products such as the art, literature, philosophy, rituals. That is the objective culture means ये सब है art, literature, philosophy, rituals, ये सब कुछ objective culture होता है. Who has said the marriage is rooted in the family rather than the family is rooted in marriage? That is the Westermarck. The Westermarck effect, also known as the reversal sexual imprinting, is a psychological hypothesis that people who lived in close domestic proximity during the first few years of their lives becomes densitized to sexual attraction. So Westmark का हिसाब से that is the sexual जो imprinting है is a psychological hypothesis of the इसी के थ्रू पीपल क्लोज इन द डोमेस्टिक प्रॉक्सिमिटी में ये लोग क्लोज होते हैं फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स दे आर बिकम डेंसिटाइज्ड ऑफ द सेक्सुअल. इसीलिए बोलते हैं कि पहले पहले कुछ सालों में डेंसिटाइज सेक्सुअल अट्रैक्शन इन लोगों में रहता है. Taravad is the kind of the extended family. Its meaning the extended family. Match the following the list, that is the G.P. Maddock is social structure, K.M. Kapadia is marriage and family in India. Then number 2 the Westermark is the short history of marriage, and Max Weber the religion of India, the sociology of Hinduism and the Buddhism. Next, that is the concept and the author. That is the primary group is we can see that is the Kule. The generalized other is made. Super ego is number 1 Freud, and the collective consciousness is Durkheim. Which one is the correct statement about the socialization? That is the role seeking process. Which one of the important concept of the theory, that is the socialization held by the Emile Durkheim? That is the collective consciousness. Pierre Bourdieu's theoretical perspective makes use the concept of the capital. Which of the following is not part of the concept? That is the political capital. Which term is used to describe various aspects of the individual identity, such as the class, ethnicity, gender, disability, and location? That is the interactionality. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.